Okay, so in the last section, we started with list in Python, and we have seen the basics of list. And today, what we'll do, we'll switch to other data types or other advanced data types in Python. So, as you can see over here, we were discussing about list, and then the other data types are tuple, set, and dictionary. ठीक है? तो लिस्ट में हमने देखा था लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल. Yes, please. Let me know whether the list is Mute. mutable data type or immutable. Mutable. Mutable. It is Mutable, mutable sir. because you can change it. Because you can change the content of your list. Okay? Since you can change the content of your list is mutable. Okay? Then what else we have seen? I come to my editor uh, on my command prompt, and I have started Python over here already. So to get a help on a specific function or the method of a list, I will type help of a parenthesis में list is the name of my class. So list dot the function name, whatever is the function or the method name. For example, it is append. So the help function will provide us a help on this specific method of a specific class. अगर आपको पूरे class के बारे में help चाहिए, so you can simply type the name of a class. Now there is one more function in Python which is quite helpful to see what are the different methods in a specific class, and that function is dir. So dir in bracket I write list. Now see what's happening. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो डबल अंडरस्कोर जो है ना आगे पीछे यहाँ पर ये HTR के आगे डबल अंडरस्कोर, दो बार डबल अंडरस्कोर, HTR के बाद में दो बार डबल अंडरस्कोर. ठीक है, जो डबल अंडरस्कोर होते हैं ना इनको हम बोलते हैं डंडर. D for double, UNDER underscore. So it is called dunder. We'll not get into those details now. We'll see it later. अब without double score वाले जो है यहाँ पर, as you can see over here. So these are the methods of my class. What are they? These are the methods of my class. ठीक है? Now these are important for us to see. So what we can see कि देखो कितना यहाँ पर सिंपल और आसान है. एक लिस्ट क्लास है हमारी और लिस्ट क्लास के अंदर इतने ही फंक्शंस है जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, and then you can do all required things on a list. Okay, you can reverse a list, you can sort a list. अगर आपके पास एक लिस्ट है, for example L equals to 10 4 15 3 1. So this is my list. If I want to sort this list, what I can do, L, यहाँ पर sort method है देखो. Okay, list class के अंदर. So L is the object of a list, dot operator, sort name of my method. Now since it is a method, so opening closing parenthesis, that's all. ठीक है, now L has been sorted. अब मैं L का content देखता हूँ, तो L has been sorted. ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो, interestingly what's happening. This was the content of L, which was unordered or unsorted, and now this content has been sorted. ठीक है, अब ये जो L dot sort हो रहा है ना, very important, please listen carefully. ये जो L dot sort हो रहा है, ये in place sorting हो रही है. कौन सी sorting हो रही है? In place sorting. What do you mean by in place sorting? कि ये जो object है L, ये जो list है L, इसी को उसने sort कर दिया, इसी को उसने change कर दिया. Now for some reason, if you do not want that, आपको ये चाहिए कि भाई जो sorted list है वो किसी और में आए, जो sorted list है वो किसी और लिस्ट में जाए, मेरी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो चेंज ना हो. तो फॉर एग्जांपल इफ योर लिस्ट इज अगेन से 10 3 16 8 5 unsorted. Okay, so I display L. This is my list. ठीक है, अब मुझे इसे सॉर्ट करना है लेकिन इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करना. आई वांट के सॉर्टेड लिस्ट कहीं और जाए. ओके, so for that purpose you have one more function called sorted. अब ये जो sort मेथड है, ये जो sort फंक्शन है, ये लिस्ट क्लास का है, as you can see over here. ठीक है,
तो इट बिलोंग्स टू लिस्ट क्लास, तो आपको लिस्ट का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम करना पड़ेगा। अब ये जो सॉर्टेड फंक्शन है, दिस डजंट बिलोंग्स टू लिस्ट क्लास, दिस इज समथिंग लाइक योर प्रिंट फंक्शन। ओके, जैसा हमारा प्रिंट फंक्शन है, तो हमारे अपर क्लास के फंक्शन है। अब ये सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा कि आप इसको कोई भी कलेक्शन या कोई भी लिस्ट आप इसको देते हो, तो उसको सॉर्ट करके उसकी सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल वन। So I write L, name of my list, and I put enter. अब यहाँ पे देखो रिटर्न हुआ है, सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न हुई है, ठीक है। इफ आई डिस्प्ले L, द ओरिजिनल लिस्ट इज स्टिल इंटैक्ट। जो ओरिजिनल लिस्ट है उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ डेटा का, बट वी आर गेटिंग द सॉर्टेड वन। तो अगर मुझे सॉर्टेड लिस्ट किसी और में डालना है, तो L1 इक्वल्स टू सॉर्टेड एंड इन ब्रैकेट, ठीक है, देन आई डिस्प्ले L1। so now L1 is sorted and the original list L is still unordered or unsorted, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें इन प्लेस सॉर्टिंग करना है कि इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करना है। अगर इन प्लेस सॉर्टिंग करना है तो लिस्ट क्लास का सॉर्ट मेथड यूज करो, अगर इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करना है तो सॉर्टेड मेथड बोल के एक डायरेक्टली अवेलेबल है, उसे आप यूज करो, फाइन। Likewise, you have other functions like reverse, remove, and so on. So you can directly check the reverse. They are quite simple. And what reverse is also doing, अभी आप रिवर्स को भी देख लो। रिवर्स ने क्या किया कि ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी, हाँ, दिस इज माय ओरिजिनल लिस्ट, सॉरी, इसको उसने रिवर्स कर दिया। तो 10 3 16 8 5। अब यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखो तो ये भी जो रिवर्सल है ये भी इन प्लेस है। इन प्लेस मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी में रिवर्सल हो गया, ठीक है, उसकी अलग से क्रिएटिंग। अगर अलग से आपको क्रिएट करना है, I think there is a function reverse. No. You need to do it separately. Hello. What is that? So there are multiple ways. जैसे कि L कोलन कोलन -1, तो आपको पूरी रिवर्स लिस्ट मिल जाएंगी। जो आपकी L है वो एज इट इज मेंटेन रहेंगी, और अभी आपको अगर रिवर्स करके किसी और में है तो यू कैन पुट इट एनीवेयर एल्स, ओके। तो द आइडिया इज व्हाट कि सभी फंक्शंस एक सिंपल और इजी फंक्शंस है जो कि आप इजीली ट्राई आउट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग dir यूज करना है, क्लास का नाम डालना। यू विल कम टू नो ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दैट, ठीक है। तो दैट इज अबाउट लिस्ट। और लिस्ट के अंदर एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट वी कॉल इट? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वेरी हैंडी थिंग इन पाइथन। पाइथन की बहुत ही हैंडी चीज है ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आप अच्छे से देखो। फॉर एग्जांपल, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है कि अगर मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है आउट ऑफ सम ऑपरेशंस और आउट ऑफ सम फंक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल, अभी यहीं पे मैं आपको बताऊं, एक स्क्वायर्स की एक लिस्ट मुझे बनाना है, एंड इट इज एन एम्प्टी लिस्ट इनिशियली, एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं 1 to 10 तक का स्क्वायर इसमें डालता हूँ। सो फॉर आई इन रेंज 1 to 10, I would like to have a square of I into squares. So let's say sqr dot append, और मुझे I का स्क्वायर उसमें डालना है, तो आई वुड से I into I, ठीक है। अब पाइथन में एक और तरीका है स्क्वायर फाइंड आउट करने का, और या फिर पावर फंक्शन जो होता है ना रेस टू, उसके लिए, तो दैट इज डबल स्टार। तो I डबल स्टार 2 मीन्स I स्क्वायर। अगर I क्यूब करना है तो I डबल स्क्वायर I डबल स्टार 3। I रेस टू 4 करना है तो I डबल स्टार 4। I रेस टू 5 करना है तो I डबल स्टार 5, लाइक दैट, ठीक है। Then after this, I would simply print my list, sqr. Okay, done.
what I will do, you know, ये पूरे कोड को था मैं सी की आदत है। ठीक है, I get to my terminal and here I would say I need to come out of my this Python advanced. Okay, so as you can see, I got the square of the numbers from 1 to 10. ठीक है, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. अब ये एक सिंपल चीज है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारी लिस्ट है इसको हम पॉपुलेट कर रहे हैं स्क्वायर से, तो हम 1 to 10। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा कि हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली, फिर उसके बाद में हमने फॉर लूप लगाया, उसके बाद में इस तरीके से हमने काम किया। द सेम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन होता क्या है कि आई विल बी क्रिएटिंग अ लिस्ट एज आई सेड यू आउट ऑफ सम ऑपरेशन और आउट ऑफ सम फंक्शन। So I would be saying sqr, my list name, equals to square bracket obviously, and here I would say I, जो statement है ना यहाँ पर I star star 2 मतलब I square, so I would say I square और स्पेस छोड़ूंगा मैं और for loop लगा दूंगा for I in range 1 to 11, done। ठीक है, here it is so simple and it is so expressive। sqr equals to in square bracket, first I would specify the operation, जो भी ऑपरेशन मेरा है, i स्क्वायर करना है, i को हाफ करना है, i क्यूब करना है, कोई भी ऑपरेशन में जो भी मुझे परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन मुझे यहाँ पर लिखना है, वो स्टेटमेंट मुझे लिखना है, और उसके बाद में जो भी लूप मुझे डालना है तो आई कैन पुट अप अ फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पर एज इट इज, ये जो फॉर लूप था उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, let me call it sqr1, let's see, then I would print my sqr1। ठीक है, let's see whether do we get the same output or not। okay, so as you can see that we are getting exactly the same output। ये जो पहली लिस्ट है, this has been created using the for loop, empty list and a for loop, and this has been done the same list, the same kind of list has been created with list comprehension। इसे हमने create किया list comprehension। तो this list comprehension as I said is very handy। आप लिस्ट को क्रिएट करते टाइम पर ही कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आपको क्यूब चाहिए तो यू कैन गो फॉर आई स्टार स्टार 3। So now this is cube 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 and 1000। ओके, सर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए रहेगा तो उसको रिवर्स कर लो आप। दिस वुड क्रिएट माय लिस्ट, और मैं अगर इसी को रिवर्स कर दूं, सर रिवर्स फंक्शन को यूज नहीं करना है, मतलब उसको बिना यूज किए नहीं कर सकते। बिना यूज किए फिर आपको उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर रेंज में स्टेप में -1 लिख के नहीं कर सकते? लेट्स सी, so the start value should be 10 and I go up to 1। डन, दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है, पहले ये जो आ रहा था ये भी एग्जैक्टली अब रिवर्स हो गया एज यू कैन सी। ठीक है, तो हमने खाली रेंज के अंदर ही चेंज किया, दैट वाज अ गुड आइडिया, गुड सजेशन। रेंज के अंदर हमने चेंज किया सीक्वेंस को, स्टार्ट वैल्यू हमने आगे की ली 10, फाइनल वैल्यू जो है वो 0 रखे तो 1 तक जाएगा वो, एंड द स्टेप वैल्यू इज -1, तो 10 होगा, फिर 9, 8 एंड सो ऑन। अभी अगर आपको इसके अंदर ऑड इवन कुछ भी करना है, यू कैन प्ले विथ इट।
You can play as per your requirement. But the good thing is what? There is a way, a very handy way, something called as list comprehension, जहाँ पर आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो आउट ऑफ सम फंक्शन, आउट ऑफ सम ऑपरेशन. अब ये क्या हो रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसके बाद में ही लिस्ट आपकी क्रिएट हो रही है. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू, नेस्टिंग आल्सो. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी आप फॉर लूप के अंदर और फॉर लूप लगा सकते हो, नेस्टिंग कर सकते हो, आप क्लॉज लगा सकते हो, आप इसके आगे इफ लगा सकते हो. तो इफ दिस clause, if this condition is satisfied, then only that value will be getting populated into your list. Okay, for example, आप clause ये लगा लो कि ये जो है ये रेंज जो है ये है 10 से लेकर 1 तक. ओके, अब मुझे 10 से लेके 1 तक सभी नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे उसमें से खाली ऑड नंबर चाहिए. ओके, क्या चाहिए मुझे? खाली ऑड नंबर चाहिए. सो आई वुड से इफ आई mod 2 equals 1. Let's see. So if this condition is true, then we do that. Okay, so as you can see, it is going only for the odd values. So 1, 3, then 5, and then 7, and then 9. ठीक है, तो ये खाली अब odd values के लिए चल रहा है, वो भी reverse order. So it's up to us, it's up to our requirement. हमारा requirement क्या है, हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं. But list comprehension काफी as I said you handy है, काफी useful है. And this is something like कि यहाँ पर जो आपके Python के advanced tips and tricks जो है वो use में आते हैं. So I would recommend each one of you that please practice on this list comprehension. So with that, what we'll do, we'll switch to the next data type, because we need to complete on few more data types. So the next one is about your tuple, set and dictionary. ठीक है, अभी जो tuple and set है, they are quite simple and straightforward. Dictionary थोड़ा सा हमको अच्छे से देखना है क्योंकि dictionary का use ज्यादा होता है. Now tuple, what do you mean by tuple? Tuple is basically a record, और जनरली जो आप डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स जो स्टोर करते हो, जो आपके रो स्टोर करते हो, बेसिकली ईच रो इज कॉल्ड एज अ टपल. फाइन. So there is a tuple class in Python. Let me come to the interpreter. So there is a tuple class in Python. अब हमें अगर लिस्ट क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. What do we do? We use the square bracket. Likewise, अगर हमको टपल क्रिएट करना होता है तो हम यूज करते हैं parenthesis. See carefully. What do we use? We use parenthesis. So parenthesis के अंदर आपको values डालना है, 1, 2, 3, something like that. And again, your tuple can have heterogeneous values. I repeat, your tuple can have heterogeneous values. Homogeneous मतलब similar, heterogeneous मतलब dissimilar. मतलब कि 1, in डबल कोट से AIKTC, 20.5, समथिंग समथिंग. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज आपकी आ सकती है. जैसे लिस्ट के अंदर आ सकती है, वैसे टपल में भी आ सकती है. तो इफ आई डिस्प्ले माय टपल T, so this is 1, 2, 3, the tuple content. And if I want to check the type of T, कि भाई T का टाइप क्या है, so it says us that it belongs to a class tuple. Okay, so there is a class tuple. Then you can do indexing also. Let's check. ओके, अगर मैं T of 0 बोला तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिला. अगर मैं T of -1 बोलता हूँ तो मुझे लास्ट एलिमेंट मिलेगा. तो ओके, मुझे लास्ट एलिमेंट मिला. और स्लाइसिंग होती है कि लेट्स सी दैट. So I would start with the first value and I would go up to the second value only. ठीक है, let's see. So yes, slicing is also possible. 1, 2 मिला, थर्ड एलिमेंट नहीं मिला क्योंकि हमने इंडेक्स वैल्यू फाइनल 2 दी है तो 1 तक के जाएगा. तो 0 इंडेक्स वैल्यू और 1 इंडेक्स वैल्यू. ठीक है. Then if I want to have the reverse of my tuple, let's see that. I would go for colon -1, and yes, it gives me the reverse of my tuple. So 3 to 1 is also coming there. Now if I want to check कि भाई क्या क्या operations और क्या क्या methods इस पे supported है, I will definitely go for my dir tuple.
Are you all able to see the content, or do you want me to increase the font size? Yes, please. No, sir, it is quite No, clear. sir. दिख रहे सर सही है ठीक ठीक गुड. ठीक है, अभी आप देख लो यहाँ पर तो लाइफ और आसान हो गई. कैसे आसान हो गई कि यहाँ पर तो यार हमको मेथड दिख ही नहीं रहे. ओहो, खाली 2 ही मेथड है डायरेक्टली यूज करने वाले, बाकी भी है बट डायरेक्टली जो नॉन डंडर है, मतलब कि यहाँ पर डबल अंडरस्कोर वो नहीं है. तो अगर वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर तो यार 2 मेथड है, काउंट है और इंडेक्स है. इसका क्या मतलब हुआ? एम आई गेटिंग एनी मेथड wherein I can insert something into my tuple, or whether I can change my tuple, or I can append into my tuple? Am I getting anything like that into the tuple class? No, क्या sir. tuple class के अंदर आपको No, ऐसा sir. कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? Immutable है, sir. टप्पल इज इम्यूटेबल. इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि टप्पल इज इम्यूटेबल. भाई आप टप्पल को चेंज नहीं कर सकते हो. इट इज अनचेंजेबल. ठीक है, तो लाइफ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल. आई कैन नॉट चेंज माई टप्पल. I check the address of my tuple t, and I get this address, and then I try to change my tuple t equals to aiktc, then say 256 and done. तो ऐसा लग रहा है कि टी तो चेंज हो गया, बट देन विल चेक द एड्रेस. So the moment we check the address, it is a different address. ठीक है, it means that this new values are not basically rewritten on the same object, but a new object has been created. Now, since the new object has been created with this name, so the old object has been removed. You can think something like that, okay? And now you cannot access the old values of t. So now the only new values of t is available. And if you change these values, so this value would be entirely overwritten. ठीक है, there is nothing like where I can append, जैसा कि लिस्ट में होता था. ये लिस्ट के अंदर l equals to l equals to 1,2 है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कर दिया l dot append, और यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी 3. अब क्या हो रहा है कि ये जो ओरिजिनल लिस्ट है l, वो ही चेंज हुई, वो अपेंड हुई, तो 1 2 3 हो गया. ठीक है, अब उसमें अगर मुझे बीच में भी कहाँ पर वैल्यू चेंज करना है तो मैं इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ लिस्ट का, एंड सो ऑन. व्हाई आई कैन डू दैट? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल. List can be changed, but tuple is immutable. Tuple cannot be changed. When you set up the value of tuple, then it remains constant. Now then the question can come into the mind कि सर अगर tuple constant है, tuple की वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते, वो immutable है, तो उसका यूज क्या है? हम tuple को यूज क्यों करते हैं? उसकी क्लास क्यों है? उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है. There can be some application wherein when you read the data, when you take the data into your data structure, so you want that data to be immutable. You want के by mistake भी वो data कभी change ना हो. तो ऐसा अगर आपका restriction है, ऐसा अगर आपका requirement है, so tuple is the best way to go for it. It will not play with the security of your data. It will not allow any alteration of your data. ठीक है, तो ऐसा अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप रीड ओनली पर्पस के लिए रीड करते हो, आपके डेटाबेस से, आपकी किसी फाइल से, या किसी भी सोर्स से आप डेटा रीड करते हो, और रीड करने के बाद में यू वांट कि प्रोग्राम के अंदर गलती से भी ये डेटा ना चेंज हो. ठीक है, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी ऑफ कोर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लाइक टपल. कि टपल के अंदर आपने वो डेटा रीड कर लिया, और वो रीड ओनली डेटा है. अब आप चाहो तब भी आप वो टपल को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, आप खाली उस डेटा को रीड कर सकते हो, उसके अंदर बेसिक ऑपरेशन लाइक काउंट अप्लाई कर सकते हो, इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, so for example if I say, if I want the help on my count function, so tuple dot count, so you need to specify the value, and what it returns, you return number of occurrences of that value. ठीक है, so I would say t dot count, and I want to check for the value 1. तो इससे 0 occurrences, और t के अंदर है क्या? t के अंदर AIKTC और 256 है, and I want to check the count of 256.
So 256 is available only one time in my tuple. If I try to change my tuple, so new tuple would be created. The old tuple will not be changed, will not be modified. Okay. So this way I can count, and then there is an index. So it will definitely return the index value of the given data element. So let's check that also. Yeah, what is index? So help tuple dot index. Index self value start value equals to 0, stop is this, return first index of a value. तो जो भी वैल्यू आप पास करते हो उसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो है, ये नंबर ऑफ ऑकरेंसेस बताता है काउंट, और जो इंडेक्स है वो जो भी फर्स्ट टाइम वो 0 से लेके आगे बढ़ेगा, चेक करते हो जहां पर भी वो फर्स्ट टाइम वैल्यू मिली उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा. So for example, if I say t dot index of 256, so it is available at index position 0. Likewise, if I say t dot index aiktc, so it is available at index value 0. If I give a value which does not exist, then it throws an exception. ठीक है, यहाँ पर भी लिखा होता raises value error if the value is not present. Okay, so value error is an exception, one of the exceptions. So that exception is raised if the given value does not exist in the given tuple. So that is about your tuple. So again, tuple is basically immutable data structure in Python, and it can be used to store the heterogeneous values. आप heterogeneous values इसमें store कर सकते हो. And once you store the values, you cannot modify the values. You can perform the operations like count, index, and so on. So very simple and fair enough. Then the next one is your set. अच्छा, अब set का क्या मतलब होता है? Can someone tell me? हेलो सर. हेलो. हाँ बोलो. हाँ बोलो. सर टपल में सिमिलर वैल्यूज रह सकते क्या? हो सकते. A thing which supports the dissimilar data types can also support the similar data type. जैसे कि मैंने t equals to 1 2 3 किया, ठीक है, तो t में क्या आ गया? All similar values 1 2 3. If you want to say कि multiple occurrences of same value, so that can also be possible. So if I say t, तो मल्टीपल ऑकरेंसेस ऑफ द सेम वैल्यू, अगर सिमिलर वैल्यू का वो आपका मतलब है क्वेश्चन का, तो मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है. दैट्स अ रीजन यू हैव अ काउंट. सो इफ आई वांट टू काउंट के हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 इज देयर इन माय टपल, सो आई कैन काउंट विद द हेल्प ऑफ अ काउंट मेथड. एंड इसके अंदर इंडेक्सिंग वो सब भी पॉसिबल है. एज आई सेड यू कैन डू अ स्लाइसिंग, यू कैन डू इंडेक्सिंग, you can do reversing with the help of slicing and so on. All those functions are applicable to your tuple. ठीक है. So the next is your set class. Now set के लिए क्या करना होता है हमको कि लिस्ट के लिए है स्क्वायर ब्रैकेट, tuple के लिए है parenthesis, और set के लिए है curly braces. See that carefully. लिस्ट के लिए है स्क्वायर ब्रैकेट, and tuple के लिए है parenthesis, सेट के लिए है कर्ली ब्रेसेस, और डिक्शनरी के लिए भी है कर्ली ब्रेसेस. नाउ वी विल सी द डिफरेंस, क्या सेट और डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस का डिफरेंस कैसे आता है. ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ सेट लाइक दिस इक्वल्स टू 1 2 3 4, एंड इफ आई वांट टू डिस्प्ले माय सेट आई वुड राइट s. ठीक है. अब ये सेट मेरा डिस्प्ले हुआ. सेट की खास बात क्या होती है कि सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू. अगर लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन अभी स्टूडेंट ने पूछा था सिमिलर वैल्यू, अगर उसका मतलब था डुप्लीकेट वैल्यू, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन टपल. यू कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, नो इश्यू, बट यू कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन सेट. तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर सेट में मैं फिर से 2 2 3 ऐसा डालता हूँ एंड आई से s, so it will automatically remove the duplicate value. That's the use of set. आपके मैथ्स में होता है ना सेट, आपने DHGT में भी सेट पढ़ा रहेगा. ओके. तो वो जो सेट जो होता है वो यही सेट है.
जो नंबर्स के अंदर जो हम सेट यूज करते हो, सेट के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, okay, join. So all these mathematical operations that we perform on a set, this is the same set. Set की खास बात क्या होती है? The numbers are in a sequence and the duplicate values are not allowed. तो अगर आप duplicate values डालने भी जाओ वहां पर, तो it will automatically remove the duplicate values because Python comes to know that it's a set. ठीक है? So if I see the type of S, it will say me that it belongs to a class set. So there is a class set. सेट नाम की क्लास है और S object is the object of a class set. Now I will try to get some help on my set class. So dir set, and then it shows that this many functions are available. I can add, I can clear, I can copy, I can check the difference, I can check the difference update, I can discard, I can find the intersection, I can find the intersection update, is disjoint, is subset, is superset, pop, remove, symmetric difference update, union update. Now, can you tell me from all these methods whether set is mutable or immutable? Mutable. So mutable है. Mutable है. For the reason? क्या रीजन है? We can add and तो remove. इसमें हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसको ऐड वगैरह कर सकते, क्लियर कर सकते. आप अपडेट कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आप पॉप कर सकते हो. ठीक है? तो ऑल दिस फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर द सेट क्लास. तो लेट्स चेक. हमारी सेट की ये वैल्यूज है एंड सपोज आई वांट टू add, so I would say s.add and I would add a value 5. Let's see. So yes, 5 got added into my set S. So I am in a position to change my set or the object of a set class. So it shows that set is a mutable data structure. Okay? List is mutable, tuple is immutable, set is mutable, immutable. Okay, mutable. अब यहाँ पर सेट के जितने मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं, वो भी अवेलेबल है. कैसे अवेलेबल है? यू कैन चेक वेदर द सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट, whether the set is a superset of another set or not. Then you can perform intersection, you can perform union. So these are the basic operations. You can check the difference of the set. So this is my set 1 2 3 4 5 and my another set S1 equals to say 1 2. ठीक है? So if I want to check कि भाई S का सबसेट है कि नहीं, from the values we can understand S1 is a subset of S. So what I would say, S1 dot is subset of S. So the answer is true. ठीक है? See the use, how it is being used. Is subset is my method name. S1 is the object on which I want to apply this method, and then I am passing this another set as an object. ठीक है? तो क्या होगा? ये ऐसे चेक होगा कि S1 is a subset of S. Whether if S1 is a subset of S, it will return true, else it will return false. Yes, S1 is a subset of S. That's why it is returning true. If I say S1 dot superset, whether S1 is a superset of S, what should be the answer? S1 is superset. False. It should be false. Yes, it should be false. So yes, it is false because S1 is a subset. अगर S dot करता हूं मैं, S dot is superset of S1, then the answer would be true because yes, S is a superset of S1. जो S set है वो बड़ा है, जो कि superset है S1 का. S1 is a subset of S. And likewise, if I want to see the intersection of S1 and S2, so I can say S dot intersection S1. क्या भाई S1 और S का intersection क्या है? So intersection is 1 2. Intersection is the common element.
So the elements which are common in both the sets are 1 2. ठीक है, अब मैं अगर S सेट के अंदर S1 सेट के अंदर एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, 6. So S1 is 1 2 6, yes, 1 2 6. And again, if I see the intersection, so the intersection is still 1 2. But if I say union H dot union S1, दोनों का अगर मुझे यूनियन निकालना है, तो see how it is working out. तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली वन टाइम ही आएंगे, बिकॉज सेट डजंट सपोज डुप्लीकेट वैल्यूज, दैट वी ऑल नो. तो सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं आएंगी, तो एक कॉमन वैल्यू 1 2. Then 3 4 5 are the values from the set S, and 6 is the value from the set S1. 6 जो है वो S1 से आ रही है, ठीक है. So this way you are able to perform various mathematical set related functions or operations on a set object. ठीक है, तो intersection हो गया, union हो गया, you can update, you can check the symmetric difference and so on. ठीक है, तो ये सब functions है, you can check all these functions, you can practice on them. They are simple and straightforward. आपको dir करना है, क्लास का नाम डालना है, आपको सभी functions की लिस्ट मिल जाती है. किसी भी function पे अगर आपको फिर help चाहिए तो help name of my class, that is set dot update. So this will give me the help on a update function. ठीक है, update a set with the union of itself and other. So this way you can practice different stuff. Now जिस तरीके से हम empty list create करते हैं, L equals to like this, then I type L, so it says L is a list. Likewise, tuple equals to empty tuple like this, and if I see the type of T, then it would say it's a tuple. Similarly, if I try to create the empty set S equals to curly braces like this, and if I check the type of S, so it says me it is DICT, which stands for dictionary. Okay, please hear carefully. If I try to create an empty set like this, if I try to create an empty set like this, and what happens कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम सेट क्रिएट कर रहे हैं एम्प्टी सेट, बट बेसिकली हो क्या रहा है, एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. क्या हो रहा है, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मैंने आप लोगों को बताया था सेट और डिक्शनरी ये दोनों के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं, दोनों के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते होते हैं. तो अगर आप इस तरीके से एम्प्टी सेट क्रिएट करोगे तो सेट नहीं क्रिएट होगा, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो एम्प्टी सेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, विल यूज द नेम ऑफ क्लास s equals to set and then parenthesis like this. ठीक है, so now this will create an empty set object s. So now the type of s is set class. See this carefully. अगर आपको empty set create करना है तो आप इस तरीके से ही create करो. आप empty list भी इस तरीके से create कर सकते हो. L equals to list like this. So this is an empty list. You can create the empty tuple also like this. T equals to tuple like this. Object which is an empty object. And likewise you can create this set object which is an empty object. ठीक है, अगर आप इस तरीके से सेट का empty object create करने जाएंगे, it will not create the object of a set. Instead, it will create an object of a dictionary. ठीक है, so for an empty dictionary, you can create a dictionary like this. For an empty dictionary, you can create a dictionary like this. So now we come down to the next most important data structure of Python, that is a dictionary. So what do you mean by dictionary? Dictionary is simple. The way we have a dictionary. Dictionary जैसी हमारे पास होती है, डिक्शनरी के अंदर होता क्या है, एक कीवर्ड होता है या फिर आप उसको वर्ड बोल दो और उसका ये मीनिंग होती है. ठीक है, तो देयर इज अ वर्ड और वर्ड के बाजू में उसका मीनिंग है. आई रिपीट, देयर इज अ वर्ड और वर्ड के बाजू में उसका मीनिंग है. इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट के ये जो वर्ड है पूरी डिक्शनरी में ये वर्ड एक ही बार आएगा. जो भी वर्ड है वो मल्टीपल टाइम, एक वर्ड मल्टीपल टाइम नहीं आ सकता. एक ही वर्ड के अगर मल्टीपल मीनिंग है तो मल्टीपल मीनिंग्स आ जाएंगे. ठीक है, वो एक वर्ड के आगे, लेकिन ये एक सिंगल वर्ड मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा. फाइन. नाउ टेक्निकली ये जो वर्ड है डिक्शनरी के अंदर, यू हैव अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग. ठीक है, so this word is called as a keyword.
this word is called as a keyword, and this meaning is called as a value which is associated with this keyword. I repeat, word is called as a keyword and the meaning is called as a value of this keyword. Okay, so what do we say that dictionary is basically a key. कीवर्ड जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में की बोलते हैं हम लोग. तो की वैल्यू पेयर. पेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू. व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ठीक है, तो ये दोनों चीज को मिला के एक पेयर बना. क्या बना? की वैल्यू. की वैल्यू, ये दोनों को मिला लो तो ये एक पेयर बन गया. ठीक है, तो अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. आई रिपीट, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. नाउ हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी? आपको क्रिएट करना है तो आप इसे कर्ली ब्रेसेस आप डालोगे. सेट में भी कर्ली ब्रेसेस आप डालते थे, लेकिन सेट में की वैल्यू पेयर नहीं होता है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है. तो एक की होगी और उसकी वैल्यू रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 ये हो गई की और कोलन और फिर इसके हम वैल्यू डालेंगे. ठीक है, कोलन हम उसकी वैल्यू डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट की वैल्यू पेयर. ये हमारा पहला की वैल्यू पेयर हुआ. दूसरा की वैल्यू पेयर डालना है मुझे, कॉमा, सेकेंड की से 2 कोलन ऐसी. ठीक है, थर्ड की वैल्यू पेयर, कॉमा 3 कोलन टीई. ठीक है, कॉमा फोर्थ की वैल्यू पेयर 4 कोलन पीई. कितनी की वैल्यू पेयर रखना है डिक्शनरी? रखे रहो. So this is my dictionary, and if I say D, so it shows me the entire dictionary. Okay, and if I say D of 0, let us see indexing is allowed. No, indexing is not directly allowed. D of key आप डाल सकते हो. D of key, तो D of key पहली की क्या है यहाँ पर 1 है, तो I can directly write 1. It will say me of 1 अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिलती है free. अगर मैं D of 2 बोलता हूँ, now this 2 is not index, हाँ, this is a key value. ये जो 2 है ये index नहीं है. Be careful, this is a key value. ठीक है, तो it says me कि भाई ये की के ऊपर ये वैल्यू अवेलेबल है. What does it says कि ये की के ऊपर ये वैल्यू अवेलेबल है. Likewise अगर मैं बोलूँ D of 4, so then it says me ये 4 के ऊपर ये की वैल्यू अवेलेबल. ठीक है, are you getting it? डिक्शनरी. Yes, sir. डिक्शनरी समझ में आ गया आपको? इट्स अ की वैल्यू पेयर and key and value are separated by colon. It's a key value pair combination, and key and value are separated by colon. बीच में colon आएगा. एक की वैल्यू हो गई, कॉमा दूसरी की वैल्यू, कॉमा तीसरी की वैल्यू, कॉमा चौथी की वैल्यू, and so on. Next important point about dictionary is that keys are unique. Note करता हूँ. Keys are unique. Keys are unique. ठीक है, मतलब कि की को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते. जैसे कि डिक्शनरी के अंदर हमने देखा था कि जो वर्ड होता है वो एक ही बार आता है. एक वर्ड मल्टीपल टाइम नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि एक वर्ड एक ही बार आएगा, उसके कितने भी मीनिंग रहने दो, मीनिंग वहीं पे रहे. फाइन. लाइकवाइज एक की मल्टीपल टाइम नहीं आ सकती. अब ये 1 यहाँ पर आ गया ना, तो आगे किसी भी की वैल्यू पेयर में फिर से 1 नहीं आएगा. इट इज नॉट अलाउड. आई कैन नॉट हैव दैट. सो दैट इज नॉट अलाउड. सो कीज आर यूनिक. फाइन. सेकेंडली, you can have any type of data in your key. दो कीज को एक ही बार प्रिंट नहीं कर सकते क्या? हाँ, you can iterate. For example, d dot items is there. Slicing system. So you have pop item, you have update, you have value. So first you tell me now, dictionary is mutable or immutable? Mutable. Sir, mutable.
इट इज म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज। गुड। तो अब यहाँ पर एक आइटम्स बोल के फंक्शन है। व्हाट आई विल बी डूइंग, लेट मी गिव यू हेल्प ऑन दिस आइटम फंक्शन डॉट items, and it says that d dot items a set like object providing a value on these items. Okay, so let me d dot items, d is the name of our dictionary. Let's see. So what it's doing, it is basically creating a list out of your dictionary. See here carefully. It is basically creating a list out of your dictionary, and then in that dictionary you have every key value pair as a tuple. See here carefully. Every key value pair as a tuple. ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हर एक की वैल्यू पेयर जो है वो एज अ टपल यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस इज क्वाइट गुड। ठीक है, अब मुझे इसमें अगर इंडेक्सिंग करनी है तो लेट्स डू दैट। आई से d डॉट items, and what if I say that I want the result? No, what I would do, I would get for the I in d dot items print I. Okay, so you can see we can iterate into it. हम उसके अंदर आइटरेट कर सकते हैं। तो d डॉट आइटम्स, उसके अंदर हमने आइटरेट किया फॉर i इन d डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एक एक जो आइटम है विच इज अ की वैल्यू पेयर वो डिस्प्ले हो रहा है। तो 1 fe और फर्स्ट की वैल्यू पेयर, 2 se सेकंड की वैल्यू पेयर, थर्ड की वैल्यू पेयर, फोर्थ की वैल्यू एंड सो ऑन। Now what I was saying, next important thing about dictionary, you can have data of any type into the dictionary. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज अलग अलग टाइप की हो सकती है। पहले की वैल्यू पेयर की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, तो दूसरी जो है वो नंबर हो सकती है, तीसरी जो है वो फ्लोट हो सकती है, एंड सो ऑन। बट इफ यू डिसाइड अ टाइप ऑफ की, तो सेम टाइप आपको सभी कीज के लिए लेना है। जैसे यहाँ पर हमने इंट ले लिया, तो अब सभी कीज इन टाइप की रहेगी। अब हम कोई और टाइप की कीज में अपडेट नहीं कर सकते। फाइन, अगर आपने की को स्ट्रिंग टाइप के लिया, यू कैन हैव अ की ऑफ स्ट्रिंग टाइप दैट यू कैन हैव। फॉर एग्जांपल आई गो फॉर अनदर डिक्शनरी and here I says fe is my key, and I says it's the first year engineering, something like that. ठीक है, yeah, then comma I say in single quotes se and colon। अब मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ 2 फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, और फिर कॉमा देन टी and I take here say a string value. Done. If I say d1, so see I'm getting this value. If I say d1 और मेरी की है fe जो कि स्ट्रिंग है, तो मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो fe अगर मैं टाइप करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये की पे क्या वैल्यू है बताओ, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि ऐसी पे क्या है ये बताओ, ऐसी की पे क्या वैल्यू है, तो वैल्यू इज 2। नाउ यू कैन सी हियर कि वैल्यूज जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। पहली है स्ट्रिंग, दूसरी है इंटीजर और तीसरी फिर से स्ट्रिंग। लेकिन जो की है, अगर पहली की अगर आपकी ये टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो सभी कीज आपकी स्ट्रिंग टाइप की ही रहेगी। योर कीज कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट टाइप, योर कीज कैन नॉट बी हेटेरोजेनियस। Note my words, keys cannot be heterogeneous, values can be heterogeneous. In dictionaries, keys cannot be heterogeneous, but values can be. ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। कीज कैन नॉट बी हेटेरोजेनियस बट वैल्यूज कैन बी हेटेरोजेनियस। ठीक है, अगर मैं हेटेरोजेनियस की डालने की कोशिश करता हूँ, d3 इक्वल्स टू और d2 इक्वल्स टू, पहले मैंने ले लिया इंटीजर टाइप की
और फिर उसके बाद में मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप की key, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इट इज टेकिंग क्या to see. Oh, it is allowing. I need to check because I got now, as I said you कि मेरा laptop पूरा format हुआ है, so I just install Python. I got the latest copy of Python. So it is possible कि उसमें update हुआ हो, but in general your keys cannot be heterogeneous. That is for sure. I need to check on this, whether into the new update the keys can be heterogeneous. Otherwise, in the earlier update, it was not possible कि आपकी की जो एक टाइप है वो ही टाइप आपकी की आगे भी रहेंगी. So keys are unique and homogeneous. The idea is what? Keys are unique and homogeneous. Your the values can be same, it can be heterogeneous and so on. For example, अगर मैं एक नॉन यूनिक भी डाल दूं A1 comma FE then 2 comma SE and then again 1 colon oh yeah 1 colon FE comma 2 colon SE comma 1 colon CE. I'm repeating my key. That is also उसने लिया नहीं. देखो यहाँ पर D3 में though I have given the same, but what it has done, it has taken the latest one. उसने latest की लिया है, पुरानी की जो वैल्यू थी उसको उसने वैल्यू को अपडेट कर दिया. ठीक है, तो की एक ही बार आ रही है 1 और जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो वैल्यू उसने वहां पर डाला है. ओके, तो कीज आर नॉट गेटिंग रिपीटेड, so keys are unique, key cannot be repeated in additionally. Fine, so what we'll do, we'll stop here because it's 12 now.